Am I audible? Okay. Hi. No, it's fine. At least आप आ रहे तो आप दोनों. From Rohit, yeah. I don't know what is happening with others. Okay, so let's start. Just a moment. Okay, so we'll start new topic. The WC area even मुझे time नहीं मिला to check due to some project work. But yeah, we'll check. Okay, before next week. But yeah, don't worry, we'll cover that topic. Okay. So the next topic is Q determination. So basically RF जो है, right, radio frequency. So उसमें Q determination resource management is very important. Okay. So now we'll check the Q determination and after that resource management. Okay. Hello. Yes, sir. Yes. Okay. So in the resource management, sorry, the Q. Just a moment. Okay, yeah. So basically resource. Okay, but before that, tell me one thing. What is an warehouse order? Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. So yeah, my question is that what is warehouse order? क्या बोल सकते हैं warehouse order की definition क्या बोल सकते हैं? वेयरहाउस ऑर्डर मतलब सर जो वेयरहाउस में जो एम्प्लॉय है उनके लिए एक स्पेसिफिक टास्क जो मतलब मटेरियल इनबाउंड होके जो आ रहा है वो पुट अवे करना है या फिर प्रोडक्शन के लिए मटेरियल निकाल के देना है, ये वेयरहाउस ऑर्डर हो सकता है ना. Yes. In simple language, we can say that is an executable package, right? Someone need to execute it, right? Physically move the हाँ. material, right? Yes, sir. Who? The resource, right? Yes, sir. Resource need to do that work, right? अभी resource मतलब क्या हो गया? उसमें क्या क्या आ गया? Worker, right? और Yes. machine, Various machineries any हैं. machine. Okay. तो फिर इसको कैसे समझ में आएगा कि वर्कर क्या मशीन को? यस आई नीड टू, बिकॉज हम तो अभी मैन्युअली कर रहे थे, राइट? वी हैव अ Yes. टास्क एंड देन विल डू. बेसिकली क्या होता है कि एक टीम रहती है, राइट? बेसिकली अलग अलग इनबाउंड के लिए अलग, आउटबाउंड के लिए अलग, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल डू द एक्टिविटी. ओके. सो क्या मैम रिकॉर्डिंग? या तो इसमें हम देखेंगे कि वो मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस हाउ वी कैन डिटरमाइन. तो इसका जो है प्रोसेस, वेयरहाउस ऑर्डर क्रिएशन, ओके, विच डिटरमाइन द क्यू, विच डिटरमाइन द लेटर रिसोर्स. मतलब वो जो क्यू होगा वो रिसोर्स को पता है. मतलब लेट्स से इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनबाउंड, सो आई नो दैट माय क्यू नेम इज इनबाउंड क्यू फॉर एग्जांपल. तो मैं अगर सिस्टम में देखूंगा, सो ऑल इनबाउंड रिलेटेड क्यू इज फॉर मी, ओके, और फॉर माय टीम. Outbound related है, then I don't need to worry about it, right? Because taking care by another team, for example.
ओके वो है. देन जो डिटर्मिनेशन है क्यू का, सो देयर आर 5 पैरामीटर. Depending on that we can trigger, that is a source activity area, destination activity area, bean access type, WPT and activity. Okay, so if you go to the SPRO, so post process setting, okay, resource management, okay, define queue type. What is warehouse number is 750, right? Simply just copy inbound, outbound and internal, just name and description. What is the warehouse number? Okay, yeah, 7500 only. Okay, save it. Okay, just queue type and then go to the define queue. It's very easy actually. So first of all we have to define queue. So again we'll check. So yeah, there are already inbound, outbound and internal, right? So for them we are just, so again is the name and the description. Okay, this queue name, and then we have to assign the queue type which we have created. So inbound ke liye we'll assign inbound, internal int, and for outbound again. Okay, now these three, right? So सर is ये the क्यू next टाइप option. क्या होता है? So queue type we can check, हम चेक करेंगे, राइट? सो उसमें क्यू टाइप से हम चेक कर सकते हैं. सो मतलब क्यू वी कैन क्रिएट मल्टीपल क्यू, राइट? बट व्हाट दैट क्यू मींस इनबाउंड 1, इनबाउंड 2, इनबाउंड 3. बट व्हाट दैट क्यू टाइप विल, सॉरी, क्यू विल डिफाइन, मतलब प्रोसेस क्या होगा, दैट इज एन क्यू टाइप. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड टास्क इंटरलीविंग, दैट इज इन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, उस टाइप में भी हम क्यू टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव द प्रेफरेंस टू आई एंड बी क्यू. मतलब जो भी क्यू टाइप को, जितने भी क्यू असाइन है आईबीडी के लिए, से लेट्स से इनबाउंड 1 2 3 4, तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड देन आउटबाउंड, लाइक दिस. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन हियर. सो लेट्स से अगर बिजनेस को रिसोर्स मैनेज भी यूज नहीं करना और आरएफ में भी यूज नहीं करना है ये क्यू, देन विल गो विथ फर्स्ट ऑप्शन. बट अगर उनको रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए बट नो आरएफ, देन विल गो सेकंड. बट अगर ये क्यू उनको यूज करनी है इन आरएफ आल्सो एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब विद हेल्प ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट दे विल process this queue in RF, that time you need to go with 3. Means in simple language, if you don't maintain 3, your system will not allow you to process this queue in RF. Okay, clear? Then the semi system guided. So इसमें क्या होता है ना, for example over there are 5 box. Okay, so for example there are 5 box. Okay, let's say yes, ये वाले. Okay, ये वाला बीन, let's imagine. सो रिसोर्स को बताया गया कि यस ये मटेरियल, ये एक ही बीन है पूरा, और यहाँ पे 1 2 3 4 7 बॉक्स है फॉर एग्जांपल. सो एनी बॉक्सेस दे कैन कम, दे कैन चेक. ओके, इस सेम मटेरियल है, सो एनी बॉक्स दे कैन पिक, राइट? तो वो सेमी सिस्टम गाइडेड से होता है. इफ यू टिक दिस वन देन यू कैन पिक एनी बॉक्स. बट इफ यू अनटिक, सो सिस्टम वो जो मटेरियल जो बॉक्स नंबर होगा वो भी स्पेसिफिक करेगा कि नो देयर आर 7 बॉक्स,
But as per the stock removal strategy, you need to go for this one because it's with the FIFO, for example. Okay, that is with semi-system guided, and this is the printout for HU. Okay, that will check in PPF. Clear? Yes, sir. Okay. Then now determination अभी inbound क्यूब कब trigger होने चाहिए, outbound internal कब trigger होनी चाहिए. For that we have that criteria. So is again, if you remember the stock removal put away strategy, right? Removal and put away उसके जैसा ही है combination. So for example, first of all I will simply delete all. Okay, for example 7500. Now see, there are two activity area. Why? One is source activity area. Okay, and then this is the destination activity area. Anyone remember difference between source and destination activity area? नहीं सर. So एक्टिविटी एरिया का हमने देखा था ना, सोर्स अगर है मतलब हम क्या करेंगे, स्टॉक रिमूवल, राइट. डेस्टिनेशन मतलब पुट अवे के वक्त, हाँ राइट. सर, हाँ, मतलब पुट अवे के वक्त जो करते वो यस, वो सोर्स. एक्टिविटी एरिया. फिर कौन सा हो गया, लेट्स से आर के 10 हो गया, राइट, जो भी हमने क्रिएट किए हाँ हुए, हाँ हाँ. राइट. यस. बट ये डिटरमाइन कब करेगा, सोर्स मतलब जब वो रॉन्ग स्टॉक रिमूवल करेगा तब हम जो भी क्यू मेंटेन करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी एरिया आल्सो यू कैन ट्रिगर क्यू. सेम विद डेस्टिनेशन, मतलब पुट अवे करते वक्त लेट्स से आपने मेंटेन किया PL10, अगर वो PL10 में जा रहा है देन इट विल ट्रिगर दैट क्यू. ओके. देन देयर इज बीन एक्सेस टाइप. तो इफ यू रिमेंबर स्टार्ट हमने सबसे इनिशियल में देखा था कि 4 क्लिप मैनुअल विच भी मेंटेन इन बीन, राइट, एज मास्टर डेटा, ये भी हम मेंटेन कर सकते हैं. ओके. देन अगेन सिंपल थिंग WPT. ओके, और एक्टिविटी. सो एक्टिविटी में क्या है, स्टॉक रिमूवल पुट अवे, देन it will not check activity area, because let's say if you are doing stock removal in any from any bin, because of that you are maintained with activity which is stock removal pick, so it will trigger that queue like that. Okay, same will go with WPT. For example, if I maintain let's say 101, or let's say okay 101. So for 101, let's say we want it should trigger. Okay, first of all enter and then yeah. Okay, so you need to type inbound queue. Okay, save it. Now again there are different combination. The system को किसको preference दे first. So for that again we have access sequence. Same like our put away strategy. So we have maintained for WPT, so it should go with WPT. Okay. Now we'll check /o/SAP/EWM/PRDI. 7500. Oh, sorry. Hopefully we'll have some delivery for which put away is not done. Okay. So we'll okay, it's already done. Task creation. Okay, so here you can see. So see for 101. So if you check, if you try to create task, okay, so here only we can see कि वो क्यों trigger हुई है नहीं. Okay, if you go to the log, okay, now scroll down. So here you can see inbound queue triggered, right? Why? Because of the WPT 101. Okay, but if you check for second one, for which WPT is 1011. See, no queue determined, right? Because there is no any definition we have maintained for 111. We have only maintained for 101. Clear? Determination.
So if you maintain for 101, then yes, for 101 also it will work here. Clear? Hello? सर एक बार फिर से समझाइए ना। ओके, तो अभी मुझे बताइए क्यू डिटर्मिनेशन किसके लिए हुआ है और किसके लिए नहीं हुआ है? सिंपल इन दिस। इनबाउंड के लिए हुआ ना वो, नहीं किया था। बट फॉर विच WPT? 101, right? For 111? नहीं किया। No. Why? Because if you go here and if you check, we have only maintained for 101, right? If you maintain for 110, sorry, 111, then for 111 also, then it will work. So if you go back, clear? Now? यस यस। So rather than going for all WPT one, what we can do instead of WPT, now let's say what I will do first, I will delete this line. Okay. Save it. I will delete both. Okay. Now 7500. So instead of that, I will maintain for activity. So which is, so let's say put away is activity, right? By default. So inbound will maintain, save it. Okay. Now if I try to create task, right? If you check now, the activity here is going to be put away, right? By default, right? So where you can see, for example, if I create for both, okay, create plus save. By default activity तो वो तो पता है, right? कि वो कहाँ put away क्यों, right? Because of WPT, right? If you check here in task, you can see over here, right? Activity put away ही है, right? दोनों में, right? But there is no any queue. So where you can see over here you can see queue determination. It's blank, right? Why? Because हमने यहाँ पे डिटर्मिनेशन तो किया, बट हमने एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया, राइट? स्टिल विद WPT. चेक हियर, see still with WPT, and then source second line, third line is again activity, a destination activity. या fourth line है ही नहीं for activity. What I will do, if I copy, instead of this I will say activity. Okay, save it. Now both task I will simply cancel, save. Now if you check, see, to determine why, because of activity. Clear? पहले केस में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि डिटरमिनेशन हमने मेंटेन ही नहीं किया सीक्वेंस था, राइट? मेंटेन नहीं किया था। यस 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 एग्जैक्टली. तो ये आपको आउटबाउंड में भी चेक करना है और इंटरनल में चेक करना है. ओके, इजी है? यस सर। एनी क्वेश्चन? दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी. Sorry, queue determination. Only depending on the setting, okay, you maintain, and then yeah, you can play with the setting.
Now, yeah, any question? We have a time, yeah. No, sir. Now, the resource management is the next part, is again very small topic. So resource में क्या होगा अभी? What is the resource means now? The manpower, right? Right, again any piece of machine, right? Now there is something called resource type. Resource type में क्या क्या आ सकता है? Worker, right? Then high picker, Machines. right? Yes. Etc. right? ये हो गया आपका रिसोर्स टाइप. वो कौन से टाइप का वर्कर है या मशीन है? मशीन में फिर क्या स्पेसिफिक टाइप है? Okay, then so let's say we have team 1 and team 2. Okay, here we have A, B, C. Okay, and here we have Q, W, R. Okay, so ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया, right? This is an resource group. Clear? This is an resource group and this is resource type. ये क्या हो गया? ये resource type हो गया, right? At high level, right? Worker है, for example. इसमें से एक machine operator means high picker हो गया. That is a resource type. But then when we will form team, that is a resource group. Okay, clear है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, now so as I said, there is something called inter-task leaving. Okay, now अभी basically क्या होगा? Let's say किसी रिसोर्स को बोला गया है कि yes, go for go and pick the material. Okay, yeah, so without inter-task leaving, right? So क्या करेगा? So उसको एक्टिविटी है कि go for put away, for example. तो वो जाएगा और put away करके रिटर्न आ जाएगा. While doing put away, मतलब put away होने के बाद वो जब रिटर्न आएगा वो empty hand आएगा, right? Which is also called dead heading, because वो आते वक्त उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, right? Are you getting my point? वो टाइम Yes, sir. वेस्ट हो रहा है, तो हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? दो एरिया मेंटेन करके सर, मतलब जो जा रहा है मटेरियल वो छोड़ के फिर से आते वक्त फिर से लोडिंग होके आएगा अगर. Yes, exactly. So then जब वो पुट अवे करेगा, राइट, तो हम बोलेंगे ओके गो इन दिस AA1 फॉर एग्जांपल, go for put away, then while coming back just ignore this issue and receipt, right? We'll go with opposite. So put away होने के बाद while coming back go in this AA1 which is another storage bin और वहां से मटेरियल लेके आना. तो हमने इफेक्टिव यूज किया, राइट, वो रिसोर्स को. यस. क्लियर? क्लियर सर. दैट इज कॉल्ड टास्क विथ टास्क इंटरलीविंग. Okay, यस सर. so again the configuration is very easy for this. So this is in resource only, resource management. Go to the resource type. So basically we have to create a resource type. Okay, so we'll again check 7500. Yeah, we'll simply delete. Okay, resource type RT we can. Okay, then here we have no interleaving. Okay, now ये जो resource type है, right?
is for, so we can assign this one for specific bean access type. Okay, let's say manual, so we'll assign both manual and forklift for example. मतलब ये जो रिसोर्स टाइप है हमने जो बनाए राइट, तो ये कौन से बीन के लिए अलाउड है होगा राइट, क्योंकि हाई पिकर ऑब्वियसली मैनुअल एरिया में जाना नहीं चाहिए ऑपरेटर, क्योंकि वो हाँ अगेन वेस्ट है, और जो वर्कर है वो रैक वाले एरिया में जाना नहीं चाहिए राइट. सो हाउ वी कैन मैनेज देन, वी हैव टू असाइन दिस बीन एक्सेस टाइप. ये बीन एक्सेस टाइप हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं, इन द बीन राइट. access type Bean access type, if you remember, /s ZWM storage bin में /003. Yes, here. हाँ 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 Okay, so we can specific, yes. Then HU type group. क्या है HU type group? क्या है HU type नहीं group? आ रहा सर HU का पता याद है? HU configuration. हाँ सर वो पैकिंग मटेरियल के लिए जो हम हैंडलिंग यूनिट क्रिएट करते हैं वही ना Yes. उसमें हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, दैट इज कि पैलेट के भी टाइप होते हैं राइट. फैमिली विल बी वन, लेट्स से यूरो हाँ पैलेट, सर हाँ एंड देन यूरो पैलेट 1, यूरो पैलेट 2. हाँ सर हाँ याद आ रहा है याद आ रहा है आ रहा है, so yeah. So we can also specifically create resource type. Obviously, अभी जो मेरा let's say जो high picker वाला है, so high picker only allowed to pick pallet, right? For example, high picker में भी हम variety कर सकते हैं. Which one is for box, pallet? Which one for you know box, right? So वो भी हम assign कर सकते हैं. Okay, so what I will do, I will only assign box right now. Clear है यहाँ तक? Any question? मतलब सर हमने रिसोर्स टाइप सॉरी वो क्या इंटरलिविंग ना सॉरी हाँ, टास्क इंटरलीविंग नहीं, वो अभी हम आगे टास्क करेंगे. नहीं टास्क इंटरलिविंग हमने विद और विदाउट वो सिलेक्ट किया आपने टिक और अनटिक बताया था उसके Yeah, बाद so that आपने is an, पिन yes, एक्सेस so that is, yeah, that is an no interleaving. So we want to go with interleaving. So no interleaving in RF. So हमें तो interleaving चाहिए, right? यस इंटरलिविंग चाहिए No means without, मतलब वो one ही activity लेके आएगा. We want with, हाँ so that's why is untick. Is opposite. यस Okay. उसके बाद हमने ये रिसोर्स टाइप को पिन एक्सेस टाइप दिया और Yes. सही ना Yeah. मतलब ये रिसोर्स टाइप कहाँ तक मतलब कौन से मीन्स कहाँ तक जाना चाहिए मतलब रैक में जाना चाहिए या फिर
यस मतलब जो रिसोर्स होगा राइट वो कौन सा मटेरियल के लिए प्रोसेस कर सकता है. फॉर हाँ हाँ एग्जांपल वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, सो ऑब्वियसली इट शुड नॉट गो विद मैनुअल एरिया. हाँ हाँ वही. तो उसके से हमने उसको बीन एक्सेस टाइप और एचयू टाइप मेंटेन, क्योंकि बीन एक्सेस टाइप मतलब वो कहाँ से उठाएगा विद बीन राइट, हाँ एंड देन द एचयू टाइप वो कहाँ से उठाएगा फ्रॉम डिलीवरी इनबाउंड डिलीवरी. फॉर एग्जांपल यस यस यस. अगर वो बॉक्स में पैलेट है तभी वो रिसोर्स कर पाएगा. अगर वो लूज प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं करेगा राइट, टास्क क्रिएट मतलब कंफर्मेशन करने के लिए. यस यस. उस केस में उसको समझ एरर गया दे इसको. देगा. समझ गया सर समझ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कट और एक्टिविटी. ओके जो भी हम इसमें करेंगे तो सिंपली go to the SM menu. Okay, master data, resource management. Okay, resource group. So first of all we have to create resource inventory, so we can create RG01 test 7500. What is resource group? This group 1 2. Okay, मैंने resource group create किया 1. Okay, then sequence. So ये जो resource group है, which one? RG01 right. तो उसको सबसे पहले कौन सा ट्रिगर करना है? क्यों? इनबाउंड, फर्स्ट प्रायोरिटी. नेक्स्ट लेट्स से आउटबाउंड. ओके, नेक्स्ट इंटरनल. क्लियर? यस सर. मतलब वो जो भी एक्टिविटी होगी टास्क होगा इनबाउंड रिलेटेड वो करेगा, देन आउटबाउंड, देन इंटरनल. ओके, नाउ कम ओके. बैक. नाउ मेंटेन रिसोर्स. ओके, न्यू एंट्री. अभी जो मैंने रिसोर्स ये जो क्रिएट किया है, ओके ये टीम क्रिएट की है, टीम 1 फॉर एग्जांपल. ये हमने मेंटेन नहीं किया कि लेट्स से नाउ करेंटली वी हैव ओनली वन रिसोर्स टाइप RT1 राइट. इन सम केसेस वी विल आल्सो क्रिएट 2. तो ये टीम 1 को है या 2 को है राइट, हाँ. वो हमने असाइन नहीं किया. सो दैट विल डू ओवर हियर. ओ सॉरी, दिस वन. तो रिसोर्स मतलब अभी वो यूजर हो गया एक्चुअल. लेट्स से EWM21 एनी रिसोर्स राइट, दैट टीम मेंबर दिस ABC. okay that one, that ABC member is belong to this RT type resource which belong to resource group which is 01. तो वो 01 से क्या लेगा? क्यू लेगा. कौन सी क्यू उठानी है? इनबाउंड आउटबाउंड राइट. हाँ हाँ. एंड देन फ्रॉम रिसोर्स टाइप इट विल चेक कि मुझे कहाँ पे प्रोसेस करना है, बॉक्स के लिए करना है, पैलेट के लिए करना है, कौन से बिन टाइप के लिए करना है. ओके, एंड देन दिस डिफॉल्ट डिवाइस, सो दिस इज फॉर RF, सो विल जस्ट मेंटेन दिस वन. ओके, later will in RF we'll check this one. Okay, and then save it. Clear? इतना ही है. And then in user, so I need to check my user, so I guess is this, not this one. Let me check. I guess 45 है. Yeah, 45. Yeah, इसमें है ही नहीं. So that 45 user is for 7500, which is for EWM21. मतलब जब भी मैं इस यूजर आईडी से लॉग इन करूंगा इज बेसिकली फॉर दिस रिसोर्स. फिर उस रिसोर्स में कौन सी क्यू है, कोई रिसोर्स टाइप है, वो सब ट्रिगर हो जाएगा राइट. नाउ अगेन इफ यू चेक फ्रॉम स्क्रैच, डिटर्मिनेशन कैसा होता है? देयर इज वन, या दिस इज एसएपी प्रेस बुक. ओके, सो whenever we'll try to सेल से हमारे पास डिलीवरी है राइट, विल ट्राई टू क्रिएट द टास्क राइट. टास्क क्रिएशन करते वक्त सिस्टम क्या देखेगा? क्यू डिटर्मिनेशन हमने क्या सेटअप किया है राइट, with source, हाँ. with activity, WPT. Okay, with the help of that it will trigger queue right. उस queue में सिस्टम देखेगा कि वो RF के लिए एग्जीक्यूट
एक्सेप्टेबल है या नहीं. ओके, so with that it will assign to resource group, right? ये टास्क क्रिएशन करने के वक्त, आफ्टर क्रिएशन, जैसे उसको टास्क क्रिएट मतलब उसको बीन मिल गया, राइट? फ्रॉम दैट बीन it will get bean access type, right? And then it will also get the HU type group, right? कि वो जो मटेरियल कौन से बॉक्स में पैक किया है, with the combination of these two, system will trigger an resource type. Then with the help of resource type and resource group, it will assign the resource, and then user can allow to do the activity. Clear? Clear, sir. Any question? सर ये पिक्चर एक बार फिर से समझाइए ना. Okay, so when you create the task, right, so there are two scenario. Okay, one while creation and one after creation. तो जो क्यू है, right, ये हमने देखा था, जब वो डिटरमाइन करता है ड्यूरिंग क्रिएशन, ये ट्रिगर करता है, राइट? क्यू हमने अभी जो देखा टास्क में, राइट? हाँ हाँ हाँ. यहाँ से वो क्यू ले लेगा, टाइप. यस राइट? यस. इसको क्यू मिल गया पूरा. डिलीवरी या पुट अवे. ओके, ये हो गया, यहाँ तक हो गया कि वो क्यू फिर आरएफ में प्रोसेस करना है नहीं करना है, वो हम देखेंगे अपकमिंग सेशन में कि कैसे करना है प्रोसेस अगर है तो, राइट? देन विद द देन आफ्टर क्रिएशन बीन एक्सेस हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं? इन बीन. हाँ हाँ. फॉर बिन एग्जांपल, एक्सेस अभी दिखाया था आपने. yes, for example I will just copy this one. राइट, ये से उसको बीन टाइप मिल गया. स्टोरेज बिन टाइप. P1 फॉर एग्जांपल, अभी हमने वो देखना पड़ेगा हमने क्या मेंटेन किया है वहां पे. ओ सॉरी, दैट इज एन बीन टाइप. वही बिन एक्सेस टाइप ऊपर है. यस, मैनुअल फॉर एग्जांपल, सॉरी माय लैपटॉप. ओके, सेव इट, राइट? तो क्रिएशन करते वक्त, राइट, इट विल ओके, ये बिन 02 ही था क्या? ओके, नेक्स्ट बिन ले लिया उसने, लेट इट बी. वो डिटरमिनेशन हमें चेक करना पड़ेगा फिर क्यों जा रहा है, इट्स फाइन. बट उसको ये मिल गया यहाँ से. ओके, क्यों मिल गया? देन जैसे हम ओके बोलेंगे, यस वी आर ओके विद दिस बीन, राइट? तो कंफर्मेशन में फिर उसको बीन एक्सेस टाइप से और एचयू टाइप से उसको क्या मिलेगा? रिसोर्स, यहाँ पे. ओके, क्लियर? यस सर यस. और फिर ये जो क्यू होगा, राइट, सो आरएफ में आई विल आल्सो शो यू. If you just copy this and if I directly move to the rf/SEWM/RFUI, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के ऊपर है. सो अगर वो क्यू आरएफ के लिए अलाउड है, राइट, जो हमने सेटिंग अभी मेंटेन की है, कौन सी वाली? क्यू में. हाँ हाँ हाँ. एक्सेस. यहाँ पे जो हमने, यस, यहाँ पे जो नहीं, यहाँ पे 3 विच इज आरएफ, हाँ हाँ. राइट? आरएफ मेंटेन की है तभी जाके वो रिसोर्स, इफ यू गो हियर सिस्टम गाइडेड देन बाय क्यू, तो वहाँ पे वो क्यू नंबर नेम डालेगा और एंटर, तो उसको वो देखिए वो दिखाएगा कि ये सीज बीन से, so this is my staging bin and this HU we need to pick. Only because that are in that screen, the 3 is maintained. Okay, if I remove that 3, you need to create new one, but let's try. Okay, now I will change it to 1. Okay, now we'll again try to create.
or again we'll try to do the same activity. Okay, so basically it should not work, but yeah, system, let's try to refresh the screen. See, वो क्या बोल रहा है, no suitable warehouse order found, बिकॉज हमने वो क्यू को डीएक्टिवेट कर दिया, आरएफ में प्रोसेस नहीं होनी चाहिए. क्लियर? क्लियर सर. आरएफ में कैसे करना है, या दैट विल सी इन नेक्स्ट सेशन. क्लियर? क्लियर सर. ओके ओके. सेशन और है सर आज. Yes, we'll try to connect on regular basis, so we'll complete, यस यस यस. as soon as possible now. 8 बजे रखिए सर, बेहतर रहता है 8 से 9. ओके ओके. देखते हैं, कभी कभी मेरा कॉल एक्सटेंड हो जाता है, सो ओके सर, कोई इशू.